Hi, Heath. So, to answer your question about you're in BCA second year and for your career, you start learning about programming, and end of this, you started learning web development. For the first of hard work is in second years. Sim 3 start, I got job, how to find a remote job, uh, web development, but I sir, I want to become successful, complex development not done. Here इसके लिए all I'll say is कि फोकस ऑन योर नीश अगर आपको लगता है कि यू वांट टू डू वेब डेवलपमेंट पिक वेब डेवलपमेंट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड मतलब डोंट लुक साइडवेज कि पाइथन कर लेता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ पिक वन थिंग एट अ टाइम एचटीएमएल करो उसे अच्छे से करने लग जाओ सीएसएस करो उसको ढंग से पढ़ो हाउ फ्लेक्स वर्क्स हाउ ग्रिड वर्क्स कब क्या यूज़ करना है व्हाट्स द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स देर आर टन्स ऑफ रिसोर्सेज उनको फॉलो करो and then just make sure whatever you give your best to it and yeah, if you want to talk more about it, I'm happy to invite you to the stream. But I hope this answer your questions. Then Vishnu says how to find a remote job as a fresher. It's very tough currently in the market, but what can I do to get those opportunities? Yeah, remote का जो culture है, it's slowly dying down. अब उसका रीजन ये है कि companies have started going back to office. A lot of these startups have started opening their offices again. So it is really hard unless you are an exceptional talent. When you have confidence in your skills, you can negotiate that I can do all these great things for your company, but my constraint is I can't come to the office. So it's all about making sure you know whose court the ball is in. अगर आपको लगता है कि you can do great things for the company, you can really do something exceptional during the interviews, you can of course ask them. But to be honest, it is actually hard to find remote job these days. Uh, Aryan says, "Hi, good afternoon. As a fifth semester student, I'm very much confused. What should I do? I'm learning DSA right now, but AI coming into play, I feel somewhere lacking behind." Here, देखो, AI is going to be a big deal in our field for the next, whatever years have to come, unless there is a big shift and something goes really wrong. Otherwise, AI का ये तो रहेगा. But I would say demotivate मत हो इस चीज से. Just make sure you keep learning, you keep evolving yourself. There are still a lot of things that AI can't do. I have personally come across so many use cases जहाँ पे AI just goes completely out of context. So the best way to go about this is कि you try to make sure कि आप DSA कर रहे हो तो DSA मतलब don't just do it for the sake of building a profile कि यार मैंने 1000 lead code questions कर लिए या 2000 कर लिए. Just understand the concept behind each and every question. मैप यूज कर रहे हैं तो कब यूज कर रहे हैं, एरेस कब यूज करने हैं, एरे में कौन सी टेक्निक यूज करनी है. Just try to learn those things. I personally am not a big DSA fan. I've always I've always tried to make sure कि मैं अपनी जो बेसिक मेरी स्किल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रंट एंड, अब वो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी रिएक्ट, इट कुड बी व्यू, इट कुड बी स्वेल्ट. सो आई ऑलवेज मेड श्योर कि मैं उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से करूँ इंस्टेड ऑफ डूइंग डीएसए, because I never really enjoyed doing DSA. I just can't do it, you know. So that's slightly beyond my interest. But huh, if you're doing DSA, that's good. But don't get demotivated by AI. It is going to be a big deal. But again, it's not like it will completely replace ही कर देगा. So yeah, I hope this answer your questions, Aryan. Uh, where can I find request? ओके लाइव स्ट्रीम चल रहा हो. Seems to be working. Okay, now Heath, sir, which you learn. Here, Heath, can you rephrase this question? I am not sure I understand your question. Aryan says, which career option is best, sir? I am doing DSA because of placement, but yes, I don't.
uh, yeah, matlab, there is no best option. It's more about what you feel you can confidently do. If you think you can do DSA, you know, decently well, keep doing it. If you think you're not enjoying it, start focusing on your niche skills. Whether it's front end, whether it's back end, जो भी है उस पे focus करो फिर. Because there is no point doing something half-heartedly and then regretting कि यार मेरा तो placement नहीं हुआ. Just pick one thing and start giving your 100% to it. Uh, what else is there? Vishnu, how to get a remote job? How and where to apply for those? Uh, yeah, there is no set formula for getting a. Uh, so there is no set formula for getting a remote job. It is mostly a combination of your personal profile, like whether you have side projects, what kind of side projects you have, कितने technically complex हैं वो projects, and then your current skills, किस टाइप के projects पे काम किया है, what sort of qualities you have exhibited in your past job, and then kind of luck as well, because remote jobs are really scarce these days. So you need to make sure you get to know about those remote job openings on time, and it's all a mixture of all three of these: luck, your current job experience, whatever you have done, all the great things you have done, and then your personal profile as well. uh, how and where to apply for those? There are a bunch of platforms, like you can find a few jobs here and there on LinkedIn as well. LinkedIn has quite a lot of remote jobs, and then you can apply on Well Found as well. So yeah, you can check out these platforms. He'd say, sir, आप कैसे 2.5 CR earn in web development? Yeah, it hasn't been a very straightforward journey. Like you know, grinded a lot in these Indian startups where I worked at, and slowly it evolved into this big fat package that you all really like to hear. But all I'll say is, like, front end work for me. I enjoy doing front end. मैं back end भी करता हूँ, but front end is what I really love doing. That's where my expertise comes in. तो आई ऑलवेज मेड श्योर मैं फ्रंट एंड को अच्छे से, मतलब एकदम अच्छे से सीखूं. जावास्क्रिप्ट एकदम अच्छे से समझना, हाउ डज इवेंट लूप वर्क्स, इवेंट लूप लिव यूवी में कैसे क्या लिखा हुआ है, इवेंट लूप का फेजेस क्या होते हैं, एंड रिफ्लेक्ट्स क्या हैं, प्रॉक्सीज क्या हैं. जस्ट मेकिंग श्योर ये जो टॉपिक्स हैं दैट पीपल यूजुअली डोंट डोंट इवन केयर अबाउट लर्निंग, ये पढ़ लिए. और ऑब्जर्वेबल्स के बारे में पढ़ना, if in case you want to use it. सो जस्ट मेक श्योर ये चीज़ आपको पता हो कि इफ यू आर राइटिंग अ कोड उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है. इट्स नॉट ब्लाइंडली कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम चैट जीपीटी एंड स्टैक ओवरफ्लो. जस्ट मेक श्योर यू नो द बेसिक्स कि क्या कैसे चल रहा है. देन yes is how can start coding from beginning? Is there any particular website app? uh okay, wait, can you please also share your personal experience to boost career and profile? Yeah, career and life. Okay, so yeah, the thing is you need to make sure career को लेके it's more like a baby to me. यहाँ पे you need to make sure you nurture it well, you grow it well. So you need to make sure you make the right decisions in your life. मतलब when you're switching to a new company, you make sure काम अच्छा हो. It's not just the big raise that they're giving you. You should make sure कि काम अच्छा हो before you join a company. Ask them कि यार मेरे को थोड़ा सा कोड दिखाओ, what sort of coding practices you follow, आपका कोड पे कितना फोकस होता है. Just understand these things. और ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपकी नेक्स्ट कंपनी जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे मतलब आपको क्या काम करना होगा, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, विद हायरिंग यू. एंड ये सब चीज़ों को लेके मेंटल क्लैरिटी इज रियली इंपॉर्टेंट. देन यश आस्क्ड हाउ कैन वन स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम बिगिनिंग? यार कोडिंग स्टार्ट करने का जो नेचुरल प्रोसेस है, इफ यू आर डूइंग HTML CSS, इट्स relatively more straightforward. But then as you start going into programming languages like JavaScript, Python, or you know or any other language, as a matter of fact, you need to make sure
you develop your logics well, कि आपको पता हो कि यार मेरे को ये अगर कोड करना है तो कैसे करना है, अगर मेरे को लेट्स से एक नंबर को रिवर्स करना है तो कैसे करना है, तो धीरे धीरे करके अपने लॉजिक्स बिल्ड करो, एंड देन यू स्टार्ट गोइंग इनटू मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस. तो आई थिंक दैट्स द वे ऑफ डूइंग इट. बट हाँ मतलब देर इज नो सेट वेबसाइट, लाइक आई नेवर फॉलोड वन वेबसाइट के यहाँ से पढ़ लिया अब यहाँ से मेरे को आ गया. I always used a combination of bunch of different resources. But हाँ आज के टाइम में you have chat GPT. Like back then there was no chat GPT, so we all had to figure out shit on our own. But आज के टाइम में what you can do is you can write some really cool prompts on chat GPT and it can be your own personal tutor. तो वहाँ से जाके you can start asking chat GPT to help you with logic building. So that could be a good way of doing it. Aryan says, sir, according to you, what will grow more, Web3 or AI? Yeah, matlab, these hot trends keep coming in. Matlab, at once there was social media, then there was SaaS, now it's Web3. In fact, Web3 was also like 2 years back. So 2021 was the year of Web3. Like it is for sure going to be a futuristic field, but matlab, these are going to be, some really big industries in the future. And then AI, yeah, of course, nobody can, dismiss the idea of AI. AI is really cool. In fact, my next startup is also going to be on AI. So yeah, AI is a cool thing these days. Then Satvik Sinha says, I'm in tier 2 college. How should I start to get a good package? Please tell a roadmap. Yeah, for a roadmap, I think I'll have to sit more patiently and, churn out a plan. But all I can say right now is pick a niche and start grinding towards it. Pick DSA, pick backend, pick front end, pick DevOps, whatever you want to do, and then start giving your 100% over there. Backend कर रहे हो तो डेटाबेस को या किसी एक लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क को लेके अच्छे से कर लो. फ्रंट एंड कर रहे हो तो HTML CSS and then JavaScript and any framework of your choice. It could be Vue, it could be Svelte, it could be in terms of library, it could be React as well. But उसको लेके अच्छे से करना स्टार्ट कर दो. So, and then about good package, our market is not doing great, to be honest. Uh, like a couple of years back, it was great. People were getting like 100% raises, but it has changed quite a lot. So I can't really say whether you can get a good package or not. But yeah, what I can confidently say is if you're really skilled, maybe not today, maybe not tomorrow, but yeah, sometime down the line you will get your, deserving price. So just make sure, you do your due credit, you do your due hard work. Then Jyoti Sharma says data science or AIML are the same thing, or data science is a part of AIML. Of course, data science is a part of AIML. Heath says, oh man, you're asking too many questions. Sir, as you say, front end loved him, but in front end also many more technology. Every know about HTML, but framework library, how to manage those all. Yeah, matlab, it doesn't matter how many frameworks come in. If you're confident with HTML, CSS, JavaScript, you can adapt. You can adapt to any other framework because eventually, at the end of the day, it's all JavaScript, right? Unless you're doing Flutter. Flutter is completely different ecosystem. But if you know JavaScript, if you're confident about it, आप React भी कर सकते हो. You can do Vue as well. I've done like bunch of different things. मैंने React पे भी काम करा है, Angular पे भी करा है. Angular में भी इतने सारे versions हैं जहाँ पे चीजें इतनी इतनी बदल जाती हैं. वो करा है. I've done Vue as well. I've done React. I've done Next.js, Gatsby पे काम करा है, Svelte पे भी काम करा है. तो it doesn't matter because at the end of the day, it's all JavaScript, TypeScript mixture. Uh, Shubham says, sir, what should I choose, data analyst or web developer? Yeah, these are two slightly different profiles. I don't think I'm the best person to suggest you something between data analyst, which I haven't experienced myself firsthand, or yeah, web development is great. You can do it, but it's a slightly more demanding profile. It's not something that will start giving you rewards from day one. It took me a long time to come from 3.6 to whatever I make these days. But yeah, if you're ready to do that hard work, if you're not scared of working long hours, making sure you're on top of the trends in the industry, then yeah, you'll get your fair share of
both financial and other perks. Arden says, does math require at high level of AI? And like I am doing DSA in Java, what are the career options in AI which I can go for? And to be honest, I really want good package. Yeah, what is this? Desire. Okay. So yeah, देखो, AI does require a bit of math, stats, and probability and these things. I wasn't great at maths to be honest. So, but yeah, it does require a bit of maths. It is not. It can't be done without maths. Then yeah, of course, there are some tools. Like for example, Google has bunch of different open source, you know, packages that you can use. But if you want to get into the hardcore AI, you do need a good bit of knowledge of maths. And then you're doing DSA in Java. What are the career option in which I can go for? Yeah, देखो DSA in Java इससे AI का AI is more like a ये foundational knowledge लो, and then whatever language you want to use you can use, right? Most of the packages are although written in Python, but हाँ उससे भी कर सकते हो. There are almost in every single language there is a wrapper for these AI tools, so you can do that. Uh, then about good package, man, I have already spoken about it. I can't promise a good package for anyone unless you are really skilled. And when I say really skilled, I mean really skilled. देन अनुज से सर सेकंड ईयर में हूँ और अब तक कुछ भी नहीं किया प्रोग्रामिंग में, प्लीज बता दीजिए कैसे स्टार्ट करूँ. यार देखो मतलब यू आर स्टिल डूइंग बेटर देन मी, एटलीस्ट यू आर सेल्फ अवेयर कि हाँ कुछ नहीं करा. तो व्हाट आई विल से इज कि बस टेक वट एवर टाइम यू नीड टू रिलैक्स, एंड उसके बाद फिर एकदम अच्छे से स्टार्ट कर लो कि हाँ यार अब मेरे को बस मेहनत ही करनी है. तो दैट वुड बी द बेस्ट वे टू डू थिंग्स. And Aditya Singh says, hi, I started learning backend in Node, but I'm confused. Please guide me. When will I start applying for jobs and how many projects required to get into freelancing? यार देखो, it's not like यार आपने एक project करा, दो project करे and you can get into freelancing. Because freelancing में the thing is they value for your time and speed. They believe that you can do this piece of work, whatever they are assigning you, in the most cost efficient and time efficient manner. So they look for a overall profile who has a good, you know, who has a good technical experience, who can do things fast, who can endure pressure. Because sometimes they give you some really unrealistic things. यार इसको ऐसे करके दिखा दो. So I would say कि पहले थोड़ा सा profile build करो. Make sure you have like enough experience under your belt that you can showcase कि हाँ यार देखो मैंने ये सब किया है. Like I didn't have a lot of experience. I just like three odd years of experience when I started doing freelancing, even less than three. But the good thing with me was I had some good connections, and then जो मैंने projects पे काम करा था, those were also really cool projects and people valued them. So that helped me a lot. So I can say probably start doing the same thing. Work on some good projects, make sure you give your best, you learn as much as you can, not just from the project but इधर उधर से भी जहाँ से भी तुम्हें लगता है you can learn anything, learn it. And don't rely on chat gpt के कोई काम आएगा तो उससे करा लेंगे. Just make sure you also know things, because chat gpt ही सब कर देगा तो then why do they need you? chat gpt से ही करा लेंगे. तो just try to make sure कि तुम you're make sure you work hard, right? That's the bottom line. So it doesn't matter which tech you pick. Yeah, of course, don't pick C, C++ क्योंकि वहाँ पे freelancing बड़ी मुश्किल है. But हाँ, if you're working on Node, make sure उसे अच्छे से करो. Then Detox says, bro, is it good to go abroad for great opportunity in web dev and DSA? यार मतलब it depends on your preferences. Like मैं दुबई गया था because of a different reason. I wanted to do other set of things, and I wanted to network better. I have gone to a bunch of different countries. Like I've been to Singapore, US, all these countries. But मैं मतलब रुकने के perspective से I don't like anything more than Dubai. So I don't know what do you mean by going abroad. If it's US, opportunity wise, it'll be great. You'll find tons of opportunities.
But again, there are other factors to consider as well, like the cost of living, ease of getting opportunities, uh, personal commitments. So you need to factor in everything. Avinash says, how to start as a freelancer in web development. Can you provide a roadmap? Man, there is no roadmap. You have to start building a profile, make sure people start noticing you, do exceptional things that other people are not doing. Because if you keep working on dashboards for all your life, you're not going to get noticed for sure. So start building some complex applications, something that other people can't think of. So for example, try to build a clone of Figma. See if you can do that. ऐसे मतलब just look at the different complexities around you and try to replicate that. Then Vishnu Verma says how to get into open source. Here open source के लिए there are tons of different ways, right? GitHub पे जाओ, there are so many different UI kit libraries. उसमें contribute करना start कर दो. That's one way. There are different libraries. For example, like मैंने कैसे किया था? I started with a package called Easy Appointments. It was a PHP based open source library. तो मैंने उसमें काम किया था. उसमें I made bunch of different commits. Then I started doing npm packages. I started writing articles. I started doing things on GitHub every now and then. I have contributed to some UI kits as well. So ऐसे कर सकते हो. I think that's a good way of getting into it. Heath says, what is the future of IT sector and web development as your point of view? यार देखो future तो bright ही है. मतलब everything is started to digitalize. So मतलब there are opportunities. Opportunity किसको मिलेगी? That's the point. And opportunity उसी को मिलेगी जो मेहनत कर रहा होगा. Arden says, what are the career option in AI and how much time it took? Oh man, I need to answer other questions as well. But yeah, career opportunities बहुत है. There are tons of career options. फ्रंट एंड में भी हैं, बैक एंड में भी हैं, डेवऑप्स में भी हैं, तो बहुत ऑप्शंस हैं. मुनावर सेज, भाई सेकेंड ईयर में मन वर्सेस जावा क्या करूं? यार देखो, मन इज नॉट अ सिंगल फ्रेमवर्क, राइट? मन इज आपको मोंगो करना है, एक्सप्रेस करना है, रिएक्ट करना है, नोड करना है. तो एंड मतलब अगर सिर्फ करने के पर्सपेक्टिव से करोगे, यू कैन बाय एनी शिटी कोर्स ऑनलाइन. वो मतलब आपको महीने में 2 महीने में सिखा देते हैं. बट इट इज सो मच मोर देन दैट. मोंगो डीबी कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड लर्न एवरीथिंग. इंडेक्सेस कैसे बनते हैं, कहाँ स्टोर होते हैं, रेप्लिकास क्या होते हैं, कब बनाने चाहिए, शार्डिंग क्या होती है, मोंगो में इलेक्शंस कैसे होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं. यू शुड यू नो गेट टू द कोर ऑफ इट अगर कर ही रहे हो तो. अदरवाइज यार फिर वेब डेवलपमेंट कर लो. नो, व्हाट वाज योर सेकंड ऑप्शन? जावा. सॉरी, जावा कर सकते हो. देन इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेज, सर जी वेब डेवलपमेंट लर्न कैसी है 2024 में, और फ्रीलांस में वेब डेवलपमेंट के मांग है. ओके यार, वेब डेवलपमेंट इज गोइंग टू स्टिक अराउंड. मतलब अभी भी आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आउट देयर, चाहे उनका एक बेसिक लैंडिंग पेज ही हो, बट दे आर समहाउ रिलेटेड टू वेब, राइट? बट हाँ, एंड्रॉइड के लिए यू कैन से कि यार कंपनीज ऐप बनाए ना बनाए, यू कांट से. बट एवरी सिंगल स्टार्टअप, लाइक मे बी नॉट एवरी सिंगल, बट हाँ, मोस्ट ऑफ देम विल हैव वेब इंटरफेस टू सम एक्सटेंट. सो डिमांड है. देन सर जी HTML CSS पे 2 मंथ लगी बट नॉट लर्न ट्रूली व्हाट टू डू. यार अगर देखो बुक की तरह पढ़ोगे तो मतलब तुम 6 महीने भी लगा लो, मतलब यू वोंट गेट एनीथिंग. सो जस्ट मेक श्योर अगर कोई चीज कर रहे हो तो यू बिल्ड थिंग्स अराउंड अराउंड इट, तो तभी जाके कुछ हो पाएगा. अगर बस बुक की तरह पढ़ दोगे तो कुछ नहीं होगा. देन अविनाश सेज, कैन यू मेंटोर मी? यार I am running really tight these days. When I have some more, flexibility around my time, tab I can definitely mentor all of you. But abhi it's really hard. Web of my good old friend says, good question answer, sir. Given a chance to redo things. Is DSA something you don't want to add?
And how do you recommend students to manage projects along with lead coding and obviously college curriculum? यार देखो, this is a myth around all of us कि यार कॉलेज में जो भी पढ़ाते हैं कुछ भी काम नहीं आता. It is not true. मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कॉलेज में भी बहुत सही पढ़ाई जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका एक सब्जेक्ट है, मतलब अगर देखो किसी दूसरी फील्ड से तो आई कांट कॉमेंट, राइट. मैकेनिकल वाले को बोलोगे कि उसका काम आएगा नहीं आएगा, तो आई एम नॉट श्योर, मोस्ट लाइकली नहीं आएगा. बट अगर सी एस आई टी में हो तो कुछ चीजें तो काम आती हैं. डेटाबेस के बारे में जो पढ़ रहे हो, डेटाबेस सब्जेक्ट होता है उसके बारे में उससे ढंग से पढ़ो. इट विल हेल्प यू अगर बैकएंड इंजीनियर बनोगे. नेटवर्किंग हर किसी को पता होना चाहिए. नेटवर्किंग एक सब्जेक्ट होता है, उसे अच्छे से पढ़ो. ऑपरेटिंग हर किसी को पता होना चाहिए. ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो पढ़ो, वो एक अच्छा सब्जेक्ट है. राउंड रॉबिन एल्गोरिदम्स, जितनी भी एल्गोरिदम्स होती है उन्हें ढंग से पढ़ो. देन मेक श्योर यू डू दैट नाइसली. कॉलेज में अच्छे से ध्यान लगा के उसे पढ़ लो. एंड देन जो बाकी खराब सब्जेक्ट्स होते हैं ना, एनवायरमेंट स्टडीज और ये सब, मैं टी कॉलेज से था तो वहाँ पे तो ये सब पढ़ाते हैं. तो उनको मैं कह सकता हूँ कि ठीक है यार, स्किप मार दो, इतनी मेहनत मत करो, पास हो जाओ बस. मतलब मेरी तरह बैक मत लाओ. बट हाँ, वट यू कैन डू इज कॉलेज करिकुलम को ढंग से कॉलेज में निपटाओ. देन यू डू लीड कोडिंग फॉर अ बिट, डेली 1 घंटा कर लो, दैट्स मोर देन इनफ. एंड देन यू डू लाइक 2-3 आवर्स ऑफ पर्सनल प्रोजेक्ट्स. अगर ये तुम डिसिप्लिन से फॉलो कर सकते हो, आई कैन डेफिनेटली से कि तुम मतलब यू विल बी अनस्टॉपेबल. And thank you, Webber, for asking me this. Then Heath says, "Oh man, Heath, I'll get back to your question in a bit. I need to answer this question as well." Pavan Kumar says, "Bro, just joined the session in my first year. Completed C and C++, nothing too advanced. Currently learning web development. Tell me what to do in my first year." Yeah, first year, mein ho, it's great. You're taking all this pain to come into sessions and ask me all these things. But what I'll say is कि वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, उसे अच्छे से करना. रोड मैप शुड बी तुम्हारे लिए पर्टिकुलरली कि HTML अच्छे से करो. स्टार्ट बिल्डिंग थिंग्स. HTML इज मोर लाइक एक बस ईंटों का घर, राइट. उसको अच्छे से कर लो. CSS इज मोर लाइक यू डू नाइस पेंट्स एंड यू मेक ऑल दीज फ्लोरल डिजाइंस ऑन योर वॉल्स, वो करो. JavaScript is more like your windows and doors, so it has accessibility. Do that. And the roadmap should be कि फर्स्ट ईयर के एंड तक अच्छे से HTML कर लो. Spend like 2-3 months on CSS. 2-3 months is a bit too much maybe, बट हाँ, जितना टाइम लगाओ अच्छे से करो. मतलब स्टार्ट लर्निंग अबाउट यूनिट्स क्या होती हैं, कब कौन सी यूनिट यूज करनी है, EM कब यूज करनी है, REM कब यूज करनी है. पैडिंग के लिए EM यूज करें, REM यूज करें, क्यों यूज करें EM को. तो गेट टू द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग. एंड देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट पे गिव एज मच टाइम एज यू कैन. बट या, गोल शुड बी कि सेकेंड ईयर के एंड तक यू शुड नो अ फेयर बिट ऑफ info on JavaScript, HTML and CSS. अगर मैं तुम्हें कोई भी वेबसाइट कहूँ कि इसको HTML, CSS, JavaScript से बना दो, you should be able to make it. मुनावर सेज, भाई सेकंड ईयर में हूँ, 4 बैग्स हैं कॉलेज में. छोटे स्टार्टअप कंपनी एंड सर्विस बेस्ड कंपनी आती है. मेरे को शॉर्ट में एक रोड मैप बता दो कि क्या करना चाहिए, एटलीस्ट 7 LPA का जॉब लग जाए. यार पहले तो बैक क्लियर कर लो. वैसे स्टार्टअप्स डोंट जनरली आस्क फॉर योर डिग्री, बट अगर क्लियर कर लोगे तो इट वुड बी नाइस. थोड़ा सा रिस्क कम होगा. देन देखो यार, मतलब ऐसा नहीं है सर्विस बेस्ड में नहीं सीख सकते, वहां पे भी सीख सकते हो. मैंने सर्विस बेस्ड में सीखा था शुरू में. बट वही है यार, मेहनत कर लो. रोड मैप यही है कि सेकेंड ईयर में हो, मेक श्योर करो थर्ड ईयर के एंड तक अच्छे से टेक्निकल स्किल कर लो अपने आप को. वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, यू सेड वेब डेवलपमेंट, राइट. हाँ, इफ यू आर डूइंग वेब डेवलपमेंट, जस्ट मेक श्योर थर्ड ईयर के एंड तक गिव लाइक 6 odd months for JavaScript. अच्छे से पढ़ो, रिसोर्सेज फॉलो करो, javascript.info and tons of other things. मॉक इंटरव्यूज दो. I'll probably start doing that. ऐसे यूट्यूब लाइव पे आके कुछ मॉक क्वेश्चंस पूछा करूंगा. डू दोस थिंग्स. एंड या, थर्ड ईयर के एंड तक वो कर लो. फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप्स करो पूरा साल, एंड 7 के 70 की भी जॉब लग जाएगी. Deepesh Singh, 3.4 years of experience in startups, second 2 years in freelance. How to get a higher remote job package in front India? यार 3.4 is like good enough experience. मतलब अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में चीजें ऐड करो. मतलब देखो 3-4 साल एक्सपीरियंस गुड इनफ होता है, तो उसको बस अब ठीक है, दैट्स गुड इनफ, काम करता रहेगा. अब अपना ना सेकंड प्रोफाइल बिल्ड करो, अपनी पर्सनल प्रोफाइल बिल्ड करो. उसमें प्रोजेक्ट्स डालो, उसमें कुछ ऐसी चीजें डालो जिससे हाँ मतलब हाईलाइट हो.
क्योंकि व्हेन कंपनीज इंटरव्यू यू, वो पूछेंगे कि यार कोड दिखाओ, क्या दिखाओ। अब कंपनी कोड तो दिखा नहीं सकते ना, यू लीगली कांट डू दैट। तो उस दैट्स वेयर योर पर्सनल प्रोजेक्ट्स कम इन, वहां पे आप दिखा सकते हो मेरा कोड क्वालिटी ये है, दिस इज व्हाई आई डू थिंग्स अ सर्टेन वे। तो दैट्स a good way of, you know, figuring out a plan to get a higher paying job. Yes says, what do you do when you're feeling stressed about a project? यार मतलब I do feel stressed sometimes, but at the end of the day it was my personal choice to get into, you know, coding. So बस यही सोचता हूँ कि यार आई एम हेयर फॉर अ रीजन, थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, एंड देन आई गेट बैक टू इट। बट हाँ मतलब आई एम नॉट समवन जो कि जल्दी से गिव अप कर देता है कि यार ठीक है मेरे को नहीं करना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई नो कि यार when others give up I have to take charge and I have to get things done. So yeah, I hope yes it answers your question. P Uday says software engineering versus software developer. Yeah, engineering is a slightly broader term, right? uh yeah, software developers are more like के बस वो बना देंगे, right? They don't try to get into the ins and out of everything. And software engineers are, you know, us like it's more like umbrella, right? And software developer is more like a part of it. Vishnu Verma says engineer is like a super, yeah, exactly what he said. Avinash Chandor says what can we expect from this channel, like what kind of content? यार मतलब अभी the idea is to just share whatever I've learned, right? Because that's what I can, you know, uh, give give all of you, you know, with the time commitments I have. आगे जाके I don't know, depending on what kind of request you guys make, because ये live stream भी I wasn't planning on doing it, but just because of the sheer, you know, volume of request I was getting, I thought maybe it's more efficient to do a live stream and then answer things there. Then Islamic information says job HTML CSS learn, जब HTML से लर्न करूँ तो उस पे कितनी वेबसाइट बनाऊँ और कौन सी वेबसाइट बनाऊँ? यार मतलब देयर इज नो सेट नंबर, मतलब जस्ट मेक श्योर के कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन्स बनाने आ जाएं, दैट्स द आइडिया, राइट? ऐसा ना हो कि अगेन यू कांट कवर एवरीथिंग, बट हाँ यू शुड बी एबल टू मेक डिजाइंस, या अगर कैजुअली मैं कोई आपको बोलूँ ये वेबसाइट रेप्लिकेट करो, यू शुड बी एबल टू डू इट, राइट? And Ishi says 2024 graduate, I interned at a startup as a Flutter developer. That company had only 2 people for tech. I ended up being scared. I then gave up time to DSS and गिविंग इंटरव्यूज, नो ऑफर इन हैंड, क्या करूं? यार मतलब देखो डरना तो चाहिए ही नहीं, मतलब व्हेन आई वर्कड ऑन स्टार्टअप्स, लाइक आई वाज मोस्टली द फाउंडिंग इंजीनियर, या जहाँ पे मेरे को ही चीजें करनी थी, तो गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन, ना कि डरना इज एन ऑप्शन फॉर मी। यही मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि ये सब मतलब ठीक है, अगर अकेले हूँ हो तुम डेवलपर या 2 लोग हैं, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, राइट? इट्स एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज कि अब तुम्हारे को पर्सनली ज्यादा सीखने को मिलेगा। डू डेवऑप्स, डू फ्रंट एंड, डू बैक एंड, सब कुछ खुद करो, जस्ट गेट अ ओवरऑल नॉलेज, राइट? जब व्हेन आई यूज्ड टू डू इट आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट लर्निंग थिंग्स कि मैं डेवऑप्स भी खुद करता था, डिप्लॉयमेंट्स करना, सब कुछ करना। तो टू मी इट वाज पर्सनली मोर अबाउट एक्साइटमेंट, तो ये कह सकता हूँ। बट या फ्लटर इज गुड, आई हैव बीन फॉलोइंग फ्लटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। I started working with its beta version in back in 2018. I wrote some article as well. But हाँ मतलब Flutter पे if you pay attention to it, it can be the next game changing framework for the future. Kashib Ahmed says सर आप रेफरल दोगे इंस्टा पे मैसेज करो? We'll think about it. Vaibhav says any plans for a cohort course for, coming in the future? Maybe a community on WhatsApp, Discord. Yeah, I just can't commit to courses. It is a long commitment. मतलब I just can't say. Courses are like a really long time commitments. अभी उतना time है ही नहीं. Aditya Singh say, but yeah, maybe I can create a community on WhatsApp or Discord. So I'm still trying to figure things out कि ऐसा एक central कुछ medium हम बना ले जहाँ पे you guys can communicate to me more, you know, frequently, and I don't have to like hop between 10 different mediums like Insta, Facebook, LinkedIn, कहाँ कहाँ पे मैसेज आ रहे हैं, तो बट हाँ I will think about creating a community.
Maybe Discord is a good option. We can do Discord. So I'll set it up. But again, I can't promise when. Maybe in the next 1 or 2 weeks. Aditya Singh says, sir, how to build good networking to get better opportunities? Yeah, matlab, I am like I am not the best person to advise on this because मैंने अपना खुद बहुत time waste करा. I just kept thinking about money कि यार 2 लाख का कॉन्फ्रेंस का टिकट है लूँ ना लूँ बट यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन नेटवर्किंग इफ यू थिंक यूर स्किल्ड अगर आपको लग रहा है अभी मेरे को काम उतना नहीं आता डोंट लाइक ऐसे कर लो बट डोंट स्पेंड लाइक बिग अमाउंट ऑफ मनी राइट बट हाँ गो टू कॉन्फ्रेंसेस गो टू यू नो दीज bunch of different startup events that are happening वहाँ पे जाके करो XYZ says भैया I'm in 12th I want to score good in CBSE but I'm very bad in JEE यार मेरा भी कुछ खास अच्छा स्कोर था नहीं I can't help you out with this बट यार अच्छे से पढ़ लो मतलब CBSE तो मतलब आई थिंक लुकिंग बैक एट इट आई वाज जस्ट स्लाइटली केयरलेस बट नंबर लाना इतना मुश्किल नहीं है यार लाइफ इज गोइंग टू बी सो मच हार्डर आफ्टर you know high school. Milan says how to find remote job with no experience. Dude, it is tough. It is tough. It's not going to be easy. Yash says what methods do you use to test your code and what makes you think this is the perfect one? No code is perfect, sir. You just need to iterate and make sure जो भी tech debt हो उनको आप timely resolve करो. Okay. Then what methods to use to test your code? यार यूनिट टेस्टिंग होती है एंड टू एंड टेस्टिंग होती है यूनिट टेस्टिंग इज टू टेस्ट योर इंडिविजुअल फंक्शंस जहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ यार प्रेडिक्टेबल कोड लिखना है एंड देन एंड टू एंड टेस्टिंग इज टू टेस्ट फीचर्स सो यू कैन डू दैट एज वेल देन देयर आर अदर टेस्टिंग्स एज वेल राइट इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी होती है बट दीज आर द टू आई मेनली फॉलो बट हाँ आई डू यू नो बेसिक वाली टेस्टिंग एज वेल लॉग्स लगा के डिबगिंग करना देन Supriya Sharma says, sir, your content is really inspiring. Thank you. Thank you, ma'am. Heath says, sir, my last question in my mind, how to start own web development agency? Oh, man. See, one way of doing this is, first of all, I think, this is my personal opinion. Of course, I could be wrong. Okay, you need to make sure you yourself are, you know, skilled. अगर आप एजेंसी चालू करोगे यू स्टार्ट गेटिंग प्रोजेक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट राइट between clients and your engineers so you need to make sure you are technical enough and then टेक्निकल के साथ साथ you also need to make sure you stay on top of the work क्योंकि लोग आपको बोलेंगे यार 9 घंटे का काम है काम 2 घंटे का है then if you're not technical enough how do you figure out whether ये 2 घंटे का है 9 घंटे का तो पहले टेक्निकली स्किल हो जाओ then you start you know pitching to different startups और वहां से मिल जाएंगे कोडर जर्नी सेज देयर इज अ स्कोप टू मेक 3D वेबसाइट हाँ यार मतलब 3D वेबसाइट आई डोंट नो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 3JS वगैरह और WebGL वगैरह या समथिंग एल्स बट हाँ उसका भी होता है देन पवन कुमार सेज सर हाउ कैन वी गेट जॉब्स इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम्स व्हाइल बीइंग इन Tier 3 कॉलेज यार मतलब स्किल्ड बन जाओ देयर आर टन्स ऑफ डिफरेंट यू नो कंपनीज हायरिंग तो वहाँ पे यू कैन गेट जॉब्स बाहर भी यार काफ़ी सारे होते हैं मतलब देर आर टन्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज मतलब हडसन रिवर ट्रेडिंग है जेन स्ट्रीट है so all these funds and quant funds हायर करते हैं मनोज शर्मा सेज माय नेम इज आदित्य त्यागी हाउ कैन आई स्कोर 90% इन क्लास 10th यार क्लास 10th तक पहुंच गए हम यार देखो क्लास 10th इज पॉसिबली द इजीएस्ट ऑफ ऑल क्लासेस क्योंकि आपको 9th में थोड़ा सा शॉक मिल चुका होता है कि यार चीज़ें डिफिकल्ट हो गई हैं 8th के बाद सो 10th लुक्स रिलेटिवली इजियर क्योंकि आपको वो आइडिया लग जाता है कि यार हम किस चीज में आ चुके हैं तो बस यार डिसिप्लिन बना लो एंड दैट्स इट सो डिसिप्लिन इफ यू आर डिसिप्लिन you'll get a good percentage 10th तक मेरी भी अच्छी आई थी मिलान एफएक्स इज रिमोट इंटर्नशिप कैसे करें इंटर्नशिप्स रिमोटली आई थिंक आई हैवंट रियली चेक्ड अ लॉट बट हाँ इंटर्नशिप्स तो आपको रिमोटली मिल सकती हैं बिकॉज यू नो सिंस कंपनीज don't pay you a lot so they should be able to accommodate remote work but हाँ again make sure जहाँ पे भी internship करो you leave a good impact because that's how you will be known while you interview for your first job and वो reference check करेंगे या बात करेंगे so just make sure you leave a good impact Ishi says should I learn one stack I feel whenever I start something I get into that tutorial loop यार tutorials are really shitty मैं मतलब I started learning from tutorials as well
बट मैं कोशिश करता था मैं डॉक्यूमेंटेशन को ज्यादा पढूं, बिकॉज दैट्स वेयर द रियल सोर्स ऑफ ट्रूथ इज. एंड ट्यूटोरियल्स में क्या होता है, वीडियो देखते हो, आप कोड लिखते हो देख देख के, बट देन द मोमेंट यू स्टॉप दैट वीडियो एंड स्टार्ट राइटिंग दैट कोड अगेन, आप भूल जाते हो, बिकॉज आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस टीप रहे हो. सो आई एम पर्सनली नॉट अ बिग फैन ऑफ ट्यूटोरियल्स. जनरल जैपी सेज मैं वेब डेवलपमेंट, रिएक्ट नेटिव ऐप डेवलपमेंट करूं और एल्स. यार देखो, वेब डेवलपर हो, वेब डेवलपमेंट करो, उसको अच्छे से करो, रिएक्ट सीख लो, रिएक्ट नेटिव अपने आप आ जाएगी. पैराडाइम सेम है, प्रिंसिपल सेम है, इट्स ऑल अबाउट अ फ्यू टैग्स हियर एंड देयर और राउटिंग के थोड़े चेंजेस. मतलब देयर आर सम इंटरनल चेंजेस एज वेल, बट मुझे नहीं लगता अगर रिएक्ट को थोड़ा सा अच्छे से सीख चुके हो एंड थोड़ा टाइम इंजीनियरिंग में कर चुके हो तो आप नहीं कर पाओगे. RYU says I have 2 years backend developer experience. When I try to switch, only get 20-30%. What can I do to get more appraisal? यार मतलब अप्रेजल लेने का मेरा तरीका तो यही होता था. आई ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर आई लीव अ ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन द कंपनी. मतलब आई वाज नेवर अ फ्रंट एंड और बैक एंड इंजीनियर. आई वाज ऑलवेज मोर लाइक अ प्रोडक्ट इंजीनियर. जहाँ पे मैं बैक एंड पे काम नहीं भी कर रहा हूँ तो आई वुड लीव गुड सजेशंस कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, दिस एपीआई रिस्पॉन्डिंग स्लोली, यहाँ पे ये एक चीज है जो रिसोर्स बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, लेट्स पुट इट इन अ कैश. तो आई ऑलवेज यूज टू गिव सजेशंस, प्रोडक्ट पे सजेशन देना कि ये फीचर ऐड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. एंड देन when you become a overall package, it's much easier to get a raise. IT Metaverse is good platform for learning Spring Boot REST API. यार मतलब I never really learned Spring Boot, but yeah, I assume कोई ना कोई documentation होगी इनकी official, go head over there, वहां से मिल जाएगा. विष्णु वर्मा, have you worked on React Native? Yes sir, I did work a lot. मतलब काफी apps बनाई हैं, more than 10. Ishwar Singh Jiras, I am sorry if I'm not pronouncing your name correctly, but I am in fourth year from tier 4 college. कौन सा DSA? नो DSA till stack क्यों, प्लीज गाइड मी. यार मतलब जो एक चीज पकड़ लो उसको अच्छे से करो. मतलब मैंने ना सच में DSA बहुत ज्यादा करा नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं मतलब कैसे तुम्हें इस चीज में गाइड करूं. बट टॉपिक्स फिगर आउट कर लो कि यार ये कुछ टॉपिक्स मेरे को पढ़ने हैं दैट आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. उनको जस्ट जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स. मतलब ऐसा नहीं है मैंने DSA नहीं करा तो मैं चीजें नहीं कर पाता. मतलब मैं व्हेन आई गिव इंटरव्यूज आई क्रैक्ड अ लॉट ऑफ देम, राइट. मैंने जब एप्पल का इंटरव्यू क्रैक करा था तो वहां पे भी उन्होंने थोड़ा बहुत पूछा था. बट जब आप इंजीनियरिंग करते हो, चीजें कर लेते हो, तो यार ऐसा नहीं है कि मतलब आप चीजें नहीं कर पाते. बट हाँ, अगर आप मेरे से कहोगे यार लीड कोड का भैया ये वाला क्वेश्चन करो, ग्राफ को ऐसे कर दो, वैसे कर दो, पलट दो, वो मेरे को उनमें इंटरेस्ट नहीं आता. और मतलब मैं डेली तो नहीं कर सकता बिल्कुल भी. डिटॉक्स इज ब्रो, आई टेक कोर्स फ्रॉम अपना कॉलेज, दे कवर्ड ऑल द मन इन 5 months, आई बिल्ड 2 month प्रोजेक्ट, इज इट इनफ टू सर्वाइव इन मार्केट. यार 5 महीने में नो वन कैन मेक यू एन एक्सपर्ट इन वन. मतलब दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू. MongoDB itself is a really big thing, right? कोई 5 महीने में कैसे सिखा सकता है. मतलब दे कैन गिव यू सम हाई लेवल आइडिया. अब जावास्क्रिप्ट पढ़ाई है, जावास्क्रिप्ट में इवेंट लूप का पढ़ा दिया होगा यार, एक कॉल स्टैक होता है, उसी में डालते रहते हैं, बट एक्चुअली इट्स क्वाइट डिफरेंट. अब यार इनफ तो नहीं है, मतलब टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट इनफ. Samuel Islam Nasir says, sir, I'm from Bangladesh, I want to be front end developer under 6 months already. I must email says, is it possible to practice daily? यार मतलब देखो 6 hours, या मतलब 6 hours is not enough. एक नॉर्मल जॉब भी 8 घंटे की होती है. सो आई वुड रिकमेंड स्टार्ट डूइंग लाइक 10-12 hours. अपने आप को मेहनत की थोड़ी आदत आदत डालो यार. मतलब आई डोंट थिंक 6 hours is enough. Again, I could be wrong, but I personally don't think 6 hours is enough. General Zappi says, where did you decide to go from web developer to software engineer? Why did you decide? Oh, यार मतलब ऐसा नहीं था, मैं वेब डेवलपर ही था शुरू से. मतलब मैं पहली कंपनी से ही बैकएंड भी करता था, बट आई लाइक डूइंग फ्रंट एंड मोर कंपैरेटिवली. सो वेब डेवलपर तो मैं कह देता हूँ, बट हाँ, आई हैव वर्कड ऑन Laravel, I've worked on Node, worked on Python as well, and I've done fair bit of work on that. ऐसा नहीं है बस मैंने हाँ एक दो API बना दी मैंने कर लिया. I've done really good amount of work. ईश्वर Ishwar Singh Jiras. So how much DSA is sufficient? Or what kind of question is this?
how much exercise is sufficient for the body. There is no limit, right? जितना कर लो उतना अच्छा है, but again don't wear yourself out. तो हाँ मतलब एरे स्टैक लिंक लिस्ट क्यूज ये सब तो मतलब पता होनी चाहिए यार, ये तो बेसिक्स है। मतलब ये तो अगर आप क्वेश्चंस नहीं भी कर रहे तो भी आपको पता होना चाहिए क्या फंडा है। कोड विद एआई सर, आई एम इन क्लास 9, व्हाट द फक यार, बच्चे इतने छोटे होते जा रहे हैं। इन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम पाइथन, प्लीज गाइड मी व्हाट थिंग्स डू आई लर्न इन माय नेक्स्ट ईयर्स। यार देखो 9th क्लास का बच्चा पूरा पाइथन, आई एम सो हैप्पी, गुड गोइंग बॉय। सो यार देखो पाइथन को लेके ना, पाइथन इज प्रोबेबली इन माय ओपिनियन द इजीएस्ट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। मतलब इट्स लिटरली इंग्लिश, आप कोड पढ़ के समझ सकते हो क्या हो रहा है, राइट? बस मैं यही कहूंगा यार, पाइथन कर रहे हो ना मतलब इसको अच्छे से समझो, मतलब स्टार्ट बिल्डिंग लॉजिक्स। अभी ना ऐसे मत करना कि मैंने पाइथन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए और बस मैं पाइथन डेवलपर बन गया। पहले कौन मतलब लॉजिक बिल्डिंग सीख लो अच्छे से, क्या आप तुम्हारे को लॉजिक्स बनाने आ जाए। नंबर रिवर्स, स्टार्ट विद द बेसिक्स, कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है, ये होते हैं, इफ के थोड़े बहुत लूप्स चलाना सीखो। लॉजिक बिल्डिंग करते रहो एंड उससे कोडिंग साथ साथ करते रहो, बिकॉज लॉजिक बिल्डिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि आगे जाके ना फिर तुम पाइथन के कॉन्सेप्ट तो सारे सीख लोगे, फाइल रीड कैसे क्या करनी है, बट जब कुछ लॉजिक अप्लाई करना होगा ना, वहां पे यू विल फील स्टक। तो उससे बढ़िया है कि तुम मतलब थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग पे भी ध्यान दो पैरेलली, सो दैट विल बी अ गुड वे। बट या स्टे कनेक्टेड, आई थिंक यू कैन डू ग्रेट इन लाइफ। आदेश खन्ना, hello sir, it's great to see you, thank you. Thank you for all the lessons, you have made a lasting impact on my career from the beginning. Thank you Adesh, thank you for the really kind words. I hope you learned something while working with me. So Adesh worked with me in a startup, but yeah, good guy. RYU says, can you suggest some platforms to get freelance work for individual developers? यार मतलब देखो मैं आई डोंट वर्क विद अ प्लेटफॉर्म, लोग बहुत काम करते हैं, आई हैव टन्स ऑफ फ्रेंड्स हु वर्क विद अपवर्क, फाइवर वगैरह, बट आई डोंट ट्रस्ट दीस प्लेटफॉर्म्स, आई पर्सनली डोंट। सो बस। देन ही सेज व्हाट यू थिंक to start my YouTube channel? Yeah, I don't understand your question to be honest. The page says career gap of 2 years. Does remote companies accept that? Nobody gives a shit. Just figure out a way to, you know, kind of defend that. यार मैंने पर्सनल प्रोजेक्ट कर लिया या मैंने ये कर लिया, और बी ऑनेस्ट कि मैंने इस वजह से गैप किया था। एंड इफ यू आर स्किल्ड, इफ यू हैव you know the right set of skills that they're needing, that they're looking for, so it won't matter much. Sorry. Dipesh हो गया. Abhishek Bansal says I'm a full stack developer with a 2 year gap. Didn't get any job or internship. It's fine यार. मतलब just make sure just make sure you learn, right? अपना वो learning curve को मतलब down मत जाने देना. बस उसको आप मेंटेन करके रखो कि हाँ यू आर एबल टू लर्न थिंग्स कॉन्टिन्यूसली, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, यू आर स्टेइंग अप टू डेट विद द ट्रेंड्स इन टेक, तो it shouldn't be a problem. But हाँ मतलब if you think gap is a problem, maybe it's not, maybe it's something else. Maybe you miss those crucial skills that companies are looking for. So start thinking the other way around. मतलब गैप को इतना बड़ा मॉन्स्टर मत बनने दो अपने दिमाग में। जनरल जैपी सेज मुझे कुछ कॉन्सेप्ट डीएस इन जेएस हार्ड जा रहे हैं, एनी सजेशंस, शैल आई स्विच टू पाइथन? यार मतलब लैंग्वेज तो इज मोर लाइक अ मीडियम, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। मतलब अब आई डोंट नो जावास्क्रिप्ट में तुम्हें ऐसा क्या हार्ड लग रहा है, अगर तुम पाइथन में वो प्री बिल्ड मेथड्स को यूज करके कर रहे हो तो अगेन उसका तो कुछ फायदा भी नहीं है। फालतू एडिट सेज हाय हाय ब्रो, और whoever you are, RYU says so how can one find the opportunities for freelance? यार मतलब अपना काम करो, उसे शोकेस करो फ्रंट एंड पे, and yeah, that's the way to do it. Yes says, do you ever feel like to learn hacking or to hack someone? I do all these. No, bro. I'm pretty packed with legal work, so I don't want to do any illegal work at least. My Mashama says hello sir, hello ma'am. Abhishek Bansal says it is DSA necessary for web developer? मतलब it's not necessary but it's more like a good to have. मतलब नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है जॉब नहीं लगेगी, कर लोगे तो कोई लॉस नहीं है। मतलब मैंने नहीं करा एंड मतलब आई एम एबल टू अर्न फ्रॉम माय ब्रेड एंड बटर, बट हाँ कर लोगे तो देयर इज नो हार्म। इफ यू हैव टाइम कर लो, बट इफ यू आस्क मी फॉर अ
comparison between DSA, or no, not comparison, but if you ask me for a choice between DSA and niche learning, I would say front and back end जो करते हो वो करो. What are your thoughts about Kubernetes and Docker? यार अच्छे tools हैं. मतलब I also use Docker. But just for those of you who don't know what Docker is a way to create your you know for example, अगर let's say तुमने एक you want to deploy your own server, right? You want to deploy your code somewhere, आपको अपना एक server setup करना है, then you want to install your database, and then you want to install npm या जो भी whatever you want to install. Up then what you can do is you can create an image and then share that image with your fellow members, and then when they install those things, Docker will make sure they install the same version and the same config. एंड क्यूबरनेटिस या मतलब यार अगर अच्छे से कर लोगे तो देखो इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेवऑप्स वाले लोग भी मेक अ रियली गुड लिविंग, तो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम. अभिषेक बंसल, कैन यू सजेस्ट सम स्किल्स फॉर द जॉब? किस जॉब के लिए यार? मतलब वेब डेवलपमेंट के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट भी कर लो यार, मतलब आई लाइक टाइपस्क्रिप्ट. योर कोड शुड बी स्ट्रिक्टली टाइप, सो कर लो, you should know this. And I think it's time here. I will give it another 3 minutes or so before I end this session. But yeah, it was quite good interacting with all of you. If you guys have any other questions, feel free to drop in. For we hit the next 2 minutes. Now it's two. And yeah, I can answer. Happy to answer. We'll probably keep doing this every week or every other week or so, depending on availability. But we'll keep interacting, and then again, to web of suggestion, we will create our community for sure. Yep, seems like no more questions are popping up, so yeah, there is one more. Why did you start your channel? Why did you feel like you should create a channel? But yeah, I think मैं मतलब I've been mentoring students for a long time, but वो personal basis पे होता था, and it was getting slightly hard कि every other person would bump in and ask me कि यार क्या करूँ, कैसे करूँ. So I felt if I create a channel, it's a better way of doing it, more efficient way of doing it. Where matlab I don't have to answer one question at a time. I can probably just share my learning, get questions in one shot, and then answer all of those questions in in a call like this, or in a live stream. So that's the motivation. Can you suggest some platform for applying these jobs? LinkedIn है, well found है. Apply over there. Share your LinkedIn profile. Here I can't, because मेरे पास ऑलरेडी बहुत जगह काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, एंड वहाँ पे मैसेजेस का रिप्लाई करना, if I don't reply to messages, people will think I'm arrogant bastard. I don't want to do that. I want to make sure मैं एक ही मीडियम पे लोगों को कनेक्टेड रखूँ, एंड देन आई सर्व टू ऑल ऑफ देम. अगर मैं सारी जगह एक्सपोज कर दूंगा तो इट विल बी रियली हार्ड. अभी मेरे पास ऑलरेडी ईमेल वगैरह आ रहे हैं, एंड इट्स गेटिंग रियली आउट ऑफ कंट्रोल टू reply to all of you. So I wanna kind of restrict the number of channels I expose. But yeah, sometime down the line I will. It's no big deal. But that's the reason. No other reason. I think we've hit our time. Probably next few seconds. Any other questions, guys? Or I'll just call it off. Yep. So guys, it was really nice interacting with all of you. I hope you got to learn, with whatever I could share in this session. We'll keep doing these, live stream sessions every now and then. And yeah, I hope I'll be able to help you out with your careers. See you guys. Bye.